A room has AC run for 5 hours a day at a voltage of 220 volt. The wiring of the room consists of copper of 1 millimeter radius and a length of 10 meter. Power consumption per day is 10 commercial units. What fraction of it goes in joules heating in wires, and what would happen if the wire is made up of aluminium of the same dimension? तो ये जो प्रॉब्लम है ये 3.16 के कंटिन्यूशन में है और ये प्रॉब्लम एक सिंपल प्रॉब्लम है जो बोर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है वो। तो यहाँ पे हमसे बेसिकली वो कंट्रास्ट कराना चाह रहा है कि एक गिवन सिचुएशन में अगर हम कॉपर वायर की जगह एल्युमिनियम वायर का यूज कर लें, यहाँ पे दो अलग अलग रेजिस्टिविटीज गिवन है, कॉपर की और एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम के केस में कितना पावर लॉस होगा और कॉपर के केस में कितना पावर लॉस होगा, और वहां से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमें कौन सी वायर प्रेफर करनी चाहिए। क्लियर? तो हमें यहाँ पे क्या क्या डाटा गिवन है, सबसे पहले हम देखें कि जो एसी है वो कितनी देर के लिए रन हो रहा है। सो दैट इज 5 आवर्स, तो 5 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड्स, सो दिस इज 18,000 सेकेंड्स। क्लियर? तो इतनी देर के लिए एसी रन होगा और जो वोल्टेज है, जिस वोल्टेज पे एसी रन हो रहा है दैट इज 220 वोल्ट। अब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, उसको आप लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर, लेंथ ऑफ द कॉपर वायर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो रेडियस इज 1 मिलीमीटर, सो द रेडियस इज 1 मिलीमीटर। तो इसी तरह आप एल्युमिनियम के भी लिख सकते हैं, सो दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम, length is same, and pi 10 to the power minus 3 whole square. So the resistance is basically here we have to look for the resistivities, so values are given here. Now the power consumed निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे जो 10 कमर्शियल यूनिट्स हैं पावर कंजप्शन पर डे, तो बेसिकली ये आपको एनर्जी गिवन है, सो 10 किलोवाट आवर, सो दैट इज द एनर्जी कंजप्शन डिवाइडेड बाय 5 आवर, सो दैट इज द पावर कंजप्शन, सो दैट इज 2 किलोवाट। क्लियर? सो दैट इज द corresponding power at which we are operating the AC, so that is 2000 watt. तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पावर लॉस के लिए हमें करंट चाहिए, सो ऑपरेशनल करंट, यहाँ पे जो करंट वायर्स में रन होगा, सो दैट इज से I, and that is the power at which the AC is operating divided by the voltage, so power is 2000 watt divided by voltage is 220, so this is say approximately 9 एम्पियर। तो वायर के अंदर जो करंट है वो 9 एम्पियर फ्लो हो रहा है। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पावर लॉस इन कॉपर वायर में पावर लॉस के लिए आप लिखें द करंट is I and its square into resistance of the copper wire. So current is 9 ampere, so that is 81, और resistance हम यहाँ से लिख सकते हैं और इस resistivity की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी। तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें, so that is 1.7 into 10 to the power minus 8 into length is 10 divided by pi 10 to the power minus 3 whole square. So solving this you will get approximately 4 watt. Clear? और यहाँ पे जो ये 4 watt power loss है that is corresponding to 2000 watt. So our power consumption is 4000 watt and the power loss is 4 watt. So the power ratio or the fraction of power loss. So fraction of power loss is 4 divided by 2000, and that is 2 by 1000, and if you multiply it by 100, so it is 0.2%. So the power wasted in operating this AC
for 5 hours per day is this much, that 0.2% of the power will get lost. Clear? And similarly for aluminium wire, so if we do the calculation for the aluminium wire following these lines, you will find out that the power loss in case of aluminium, it comes out to be 6.4 watt, and if we find out the percentage loss will come out to be 0.32%. so there is a difference between the power loss of while using copper wire and the aluminium wire, and in aluminium wire the power loss is more. So for longer runs it is preferable that we must use copper wires, as the percentage loss of power loss is less.